बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल करते हैं, और खुसूसन इस कोर्स के अंदर आपने मेरे मुंह से बहुत दफ़ा उस लफ्ज़ का इस्तेमाल सुना है, वो है सस्टेनेबिलिटी। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, किसको हम सस्टेनेबल कहते हैं। Sustainability suggests continuity over time. That is, a society can said to be sustainable if its structure and properties allow it to continue over a long time. तो ऐसे काम, ऐसी चीज़ें जो वो एक लंबे अरसे तक रहेंगी, उसको हम सस्टेनेबल कहते हैं। अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी की डेवलपमेंट जो है वो एक लंबे अरसे के लिए है और उसमें जो उसको सस्टेन रखने के लिए कॉस्ट में कमी आ रही है और चीज़ें इस्तेमाल करने में कमी आ रही है, तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली यूज्ड इन अ स्पेसिफिक वे। Nowadays, sustainability is usually defined as a processes and action through which humankind avoid the depletion of natural resources in order to keep an ecological balance that doesn't allow the quality of life of modern society to decrease. यानी ऐसे काम किए जाएं जिससे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम ना हो और हमारी जो डेवलपमेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और बाकी चीज़ों में कम्युनिटी की डेवलपमेंट जो है वो एक लंबे अरसे तक बरकरार रहे। सस्टेनेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस where human needs and action are addressed in a way that is environmentally friendly action that take into account the effects individual actions have on the world and society as a whole and toward future generation. Many people already have become more mindful of their action and how they can be more sustainable for their benefits and the benefits of those around them. अब लोगों ने अब इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि वो कौन से ऐसे एक्शंस हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको करके वो अपने आप को देर तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देर तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। The term sustainability has been broadly applied to characterize improvement in areas like natural resources, overexploitation, manufacturing operations. It is energy use and polluting subproducts, the linear composition of products, the direction of investment, citizen lifestyle, consumer purchasing behavior, technological development, or business and general institutional changes. कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको अडॉप्ट करने के बाद हम अपने रिसोर्सेज को जो है कम होने से बचा सकते हैं और अपनी जो तरक्की है उसको देर पा रख सकते हैं। Sustainable development is the idea that human societies must live and meet their need without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development is a way of organizing society so that it can exist in the long term. यानी ऐसी डेवलपमेंट कि एक सोसाइटी जो है वो लंबे अरसे तक रहे और उसकी डेवलपमेंट जो है वो एक लंबे अरसे तक रहे और उसकी डेवलपमेंट को मेंटेन रखने के लिए कम से कम एक्सपेंडिचर्स करने पड़े, कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़े ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म ना हो और नए रिसोर्सेज जनरेट ना करने पड़े या नए रिसोर्सेज की तलाश ना करनी पड़े। दिस मीन्स टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द रिक्वायरमेंट प्रेजेंट एंड दोज ऑफ the future, such as the preservation of the environment and natural resources or social and economic equity. आप हर वक्त ये बात सुनते हैं कि हमें कौन सा ऐसा काम करना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए ताकि हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको सस्टेन कर सकें, लंबे अरसे तक रख सकें। जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको उन तब्दीलियों से बचाया जाए, तो ये सब सस्टेनेबिलिटी के ब्रॉडर कैटेगरी में, ब्रॉडर थीम के अंदर आता है। Why should communities consider be sustainable? क्यों उनको सस्टेनेबल होना चाहिए कम्युनिटीज़ को? इसका पहला रीज़न हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ओवर द टाइम द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट अ कम्युनिटी हैज़ will slowly decrease. Many of the action that sustainability promotes extend the lifespan of resources and reduce the dependence on outside resources.
so that there is a less time and money being spent on restocking supplies. This can cause a community to be more financially stable and independent, which can help boost local economies and spending ways. तो अगर सस्टेनेबल होंगी जो हमारी कम्युनिटी सस्टेनेबल होंगी तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं, यानी हमें अपने डेवलपमेंट को मेंटेन रखने के लिए, अपनी जो हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट है, तरक्की है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें कम से कम जो है वो एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, जिससे कम्युनिटी जो है वो फाइनेंशली उसकी तरक्की होगी. Community members will often be under less financial strain through sustainability, as there is a less pressure or need for things like property tax of offset community spending. With the fluctuation in the national and global economy, this can help ensure the financial survival of community in time of economic downturn, prompt growth, and help reduce poverty. Better work-life trade-off. The economic value and cost effectiveness typically means that there is a less strain on each individual household in the community. Things like housing, transportation, and energy tend to become more affordable through sustainability. अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जो सस्टेनेबल होगा, जिसका असर जो है वह लंबे अरसे तक होगा, तो इनकी कॉस्ट जो है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी की, ये हमारे लिए चीप हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब है. Which means that there is a less of need for long hours at work over time just to make ends meet. People can spend less time stressing about their job or paychecks and can live and enjoy their life. Public use efficiency. Sustainability makes it so the public service and features of the communities are easily accessible to members. The placement of public facilities like parks, libraries tend to be done in such a way that distance is not an obstacle and where they will get the most use. जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम घर बैठे भी अपनी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं. Public transportation system, even something as simple as shared ride program. Shared ride program ये होता है कि आप पूल कर लेते हैं, आप शेयर कर लेते हैं. अगर आपको काम पे एक ही जगह जाना है, एक ही वक्त में जाना है, तो आप अपनी अपनी गाड़ियों पर जाने की बजाय आप पूल कर लेते हैं. आप कहते हैं कि एक दिन मैं आपके साथ चला जाऊंगा या चला जाऊंगी, एक दिन आप मेरे साथ चले जाएं, या एक दिन जो है एक वीक मैं आपको ले जाऊंगा, एक वीक आप मुझे ले जाएं. इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रहे हैं और आपके हमसाए भी उसी स्कूल में से बच्चों को पिक करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आप पिक कर लें, या एक वीक आप पिक कर लें, एक वीक वो पिक कर लें, सुबह के टाइम वो छोड़ दें या आप छोड़ दें और वापसी पे. ये सारा जो चक्कर है, ये सारा है कि हाउ यू मैनेज. तो इस तरह आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर गामजन होते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इवन समटाइम एज सिंपल as shared ride program, tend to be more available and can assist in overcoming access difficulties for resident. Energy efficiency. Environmentally friendly energy resources and management tends to lead to better energy efficiency in community. Community aesthetics, due to the change made to improve things in the community, sustainability makes community physically look good. Tourism boost. Multiple other effects of community sustainability can help increase community tourism. Aesthetic changes catch the attention of potential visitors through the reputation of the area has. So, ये तमाम वो बातें थीं जिसकी मदद से हम अपने जो इलाका है, अपनी जो कम्युनिटी है, उसकी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कर सकते हैं, लंबे अरसे तक रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट में कमी आएगी और हमारी जो कम्युनिटी है वो लंबे अरसे तक तरक्की कर सकती है. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और आपको इसको समझने में अगर कोई मुश्किल हो रही है तो आपके जो नोट्स आपको असाइन किए गए हैं, आपको जो बुक्स असाइन की गई हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह इसकी और समझ आ जाएगी. थैंक यू वेरी मच.